वेलकम टू मलुका आईएएस। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डेली आंसर राइटिंग, जो आपके पॉलिटी सेक्शन वाला है। द क्वेश्चन इज बेसिकली रिगार्डिंग द पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, यूपीएससी ने एक एस्पेक्ट कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी टॉपिकली है कि नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली फ्रेंड्स बहुत ही कम हो चुके हैं। नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट कंसेप्ट्स दैट बच्चा पढ़ तो लेता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करना आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। द क्वेश्चन फॉर डे 2 इज Panchayati Raj institutions are simultaneously a remarkable success and a staggering failure depending on the goalpost against which they are evaluated. तो क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं पे एक रिमार्केबल क्या है, सक्सेस भी है, और सक्सेस के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं पे ये फेलियर भी है। कुछ लोग मानते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज बहुत सक्सेस हो चुके हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि पीआरआईज एक बहुत बड़ा लेवल के ऊपर फेलियर है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द गोल पोस्ट अगेंस्ट विच दे आर एवेल्युएटेड, तो हमें देखना पड़ेगा कि आपने गोल पोस्ट क्या रखा है। गोल पोस्ट का मतलब आप एम क्या लेके चल रहे हो, कि क्या आप पैरामीटर्स रख रहे हो कि हम इसको सक्सेस माने या इसको फेलियर माने। तो पहले बात तो हमें गोल पोस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हाट कैन बी द फॉर एग्जांपल गोल पोस्ट। In that particular aspect, there can be two things that are coming in the context. If the goal was basically that we wanted to provide another layer, एक new layer, if the goal was basically कि एक आप नई लेयर ऐड करना चाह रहे, किसमें? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक तो ये गोल हो सकता है कि आप यार एक सेंटर है, स्टेट है, हम एक नई लेयर ऐड करते हैं कि लोअर लेवल के ऊपर भी क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इसके कंटेक्स्ट में एक थर्ड लेयर होगी जहां पे लोगों को लगे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। एक तो ये गोल पोस्ट हो सकता है। द सेकंड गोल पोस्ट कैन बी बेसिकली इन द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट कि क्या हम बेटर गवर्नेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मतलब क्या है कि गोल पोस्ट क्या था कि क्या हम अगर बेटर गवर्नेंस भी प्रोवाइड करने में कामयाब है कि नहीं है। तो दो अलग अलग गोल पोस्ट आ गए कि आप पीआरआई को सक्सेस है या पीआरआई फेलियर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने गोल पोस्ट क्या फिक्स किया था। अगर आपका फ्रेंड्स गोल पोस्ट था ये वाला, एक नई लेयर आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हो इट हैज बीन अ सक्सेस, कामयाब है। थर्ड लेयर हम ऐड कर चुके हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी बढ़ गई है। But on the other hand, if the goalpost was basically to provide for what is called the better governance, it has been a staggering failure in that particular regard. अगर ये गोल पोस्ट करते हैं पहले वाला तो सक्सेस है, अगर ये गोल पोस्ट करते हैं इट इज बेसिकली अ फेलियर। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, PRIs are a simultaneously a remarkable success and a staggering failure. Whether it is a success or a failure will depend upon what are the goalposts you are basically thinking. तो starting में क्या लिखोगे? It is a success if the goalposts were this. It is a failure if the goalposts were other things. तो इसके कंटेक्स्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने क्वेश्चन को। तो ये पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर हम लेके चलते हैं कि गोल पोस्ट की जब बात कर रहे हैं, व्हाट विल बी द गोल पोस्ट, अगर सक्सेस की तरफ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज टू ऐड एन अनदर लेयर, और फॉर एग्जांपल इफ इट वाज द स्टेट इलेक्शन कमीशन दैट वाज बेसिकली मेड इन चार्ज, we created infrastructure. Infrastructure was basically being created, required, and that was basically required to elect the state representative. The local representatives were to be elected, and therefore in that particular regard approximately 2.5 lakh PRIs, panchayati raj institution, and the representatives were there, urban local bodies were there.
when 2.5 lakh urban and panchayati raj local bodies they were basically be added that elected more than 3 million elected representatives. इतने ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम बोल रहे हैं कि सक्सेस है और सक्सेस का मापदंड हमने रखा हुआ कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही है, हम बढ़ा दिए यार. Therefore, it is a success in that particular regard. Not only the success, but 1/3 of the seats are also being reserved for the women, and therefore we are the country to provide for the maximum number of representations that are basically be given to the women. 1.4 million elected women representatives हो चुकी हैं. कितना हो चुका है? 1.5 million women representatives की जब हम comparatively बात कर रहे हैं. Not only this, but if we say that we want to give more and more representation, for example, the representation were given to the scheduled caste and the scheduled tribe also to a great extent. And therefore, a genuine representation was also being given to these people. And therefore, when the women were being given representation, the scheduled caste, the scheduled tribe were given the representation. What was the positives? For example, women hai yahan pe, SC, ST है category, the representation was given. The issues that concern them, for example, women को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है. Women put up these issues that we need a tap water, we need to build, for example, the sanitation, the toilets has to be built. SC, ST communities, for example, they were more better assimilated within the society, political structure also. Therefore, in that particular regard, अगर representation की बात कर रहे हैं, we are compared to a great extent as success. But on the other hand, that is a staggering failure if we take into consideration various other dimensions that are there. For example, funds, functionaries, finances, etc. were not being made available to a great extent, which were needed for the better functioning of these institutions. तो यहाँ पे आपको एक जगह पे देखना है कहाँ पे सक्सेस है. अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत बढ़ा दिए हैं. विमेन रिप्रेजेंटेशन है, SC है, ST है, एंड इश्यूज कंसर्निंग देम वर आल्सो बीइंग हाइलाइटेड, वर आल्सो बीइंग टेकन अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टेक इनटू कंसीडरेशन द फंक्शंस, द फाइनेंसेस, द फंक्शनरीज, we have totally failed in this particular aspect. Totally a failure. For example, various governance functions की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम failed. For example, education, health हुआ, sanitation हुआ, water हुआ, etc. जब इनकी comparatively बात कर रहे हैं, they were not being clearly mandated for doing for the functionings. For example, in that particular regard, little authority devolution was done in the context of the functions also. तो यहाँ पे क्या है कि आपको power किसके पास रही? Center के पास. Power किसके पास रही? Concerned state के पास. For example, what is the terrible state board की जो हालत है? For example, the state water board की हालत है, that is being known to all. Water is not being provided in a better way. Not only this, the finances were also not being made available. Firstly, it was not being made available, and if they were given some power to tax, तो tax नहीं लगा रहे ये लोग. Therefore, there is a problem of the finances also. The power to tax is not there. Not only this, tax की जब बात कर रहे हैं, but also intergovernmental transfers. सेंटर ने स्टेट को दे दिया, डिपेंड्स ऑन दी विशेस एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट कि आगे ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है. Therefore, the finances also created a problem. The PRIs, for example, therefore, as the finances were not being available, the new projects that were required to be taken up by these PRIs were not taken. आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी. Not, for example, functionaries. As per the law, there has to be various, for example, IS officer and other people have to work according to the directions that are being given by the sarpanch and other people. And बहुत बोर्ड के ये रिप्रेजेंटेशन भी इनको होनी चाहिए, but
despite the fact that various functionaries were required to be under them, they were not put implementation. तो फंक्शनरीज भी आपके पास नहीं थे ताकि आप अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे फंड्स की प्रॉब्लम है, फंक्शंस की प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है, जिसके चलते हुए ही दे आर एंड कैन बी सेड दैट दे आर बेसिकली अ स्टैग्निंग फेलियर। तो दोनों चीजें आपने बतानी है। अगर सक्सेस के बारे में ये आ जाएगा, फेलियर के बारे में फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा, तो वहां पे कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों एस्पेक्ट आपको रिप्रेजेंट करने हैं। और आप एंड में क्या लिखोगे कंक्लूजन में? They said, in the conclusion, you have to write that if we are looking for a solution. If a solution is to be needed, the need of the hour is basically to foster fiscal federalism. Has to be one thing, along with, for example, activity mapping. किस एक्टिविटी के लिए कितने फंक्शंस चाहिए, कितने फाइनेंशियल्स चाहिए, फंक्शनरीज आपके अंडर चाहिए, एंड अ जेन्युइन, आई एम सेइंग अ जेन्युइन फिजिकल फेडरलिज्म इज द नीड ऑफ द आवर, अकम्पेनिड बाय फिजिकल ऑटोनॉमी आल्सो एंड फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी। फेडरलिज्म तो दे दिया, ऑटोनॉमी भी आपको देनी पड़ेगी, आपको रिस्पांसिबिलिटी भी देनी पड़ेगी कि हाँ पैसा दे रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी भी कंप्लीटली आपकी बनती है। Therefore, in the particular regard, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा करोगे कि they are a staggering failure and a success depending upon the goal post they are basically being chosen। तो इसका पूरे का पूरा मॉडल आंसर जो है वो that has been uploaded for you people। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से करिए, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स उसको हम ऑटोमेटिकली अपलोड करते जाएंगे और आपके आंसर्स भी चेक होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से आप अपने अच्छे से आंसर लिखते रहिए एंड देयर विल बी इवैल्यूएटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर 1 2 3 4 को हम कवर करें। थैंक यू वेरी मच।